interactive session. Yes, so we were here. We had understood. 1 minute. More people are entering again. Okay. So we had understood about gratitude day before yesterday. How gratitude we need to say gratitude is a feeling, and the more you bring into your life, it says कि Newton's law is 1 for 1. What you give, you receive. आप जो दोगे वही आप पाओगे. That means that if you increase your feeling of gratitude, the results in your life will expand to be equal to your feeling. The truer the feeling, the more sincerely grateful you are, the faster you will change, your life will change. तो आपको सिर्फ लिखना नहीं है gratitude. You're not just going to write gratitude, you're going to be in gratitude, you're going to feel the gratitude. And then you'll see the change. So when you discover how little practice it takes, how easy it is to incorporate gratitude into your daily life. हम बोलते हैं अरे टाइम ही नहीं मिलता मैम, we are working. But understand, the more you put yourself into these practices, you will see the difference. And when you see the magical results for yourself, you will never want to return to the life you used to live. If you practice gratitude a little, your life will change a little. If you practice gratitude a lot, your life will change dramatically in the ways that you can hardly imagine. तो आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आप रिजल्ट देखोगे. आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे आप थोड़ा रिजल्ट देखोगे. That is what it is saying. So here the magic book is. As we express, now see, gratitude is power, understand, and visualization. विजुअलाइजेशन जो होता है ना, वो आपकी कल्पना शक्ति होती है. आप ग्रैटिट्यूड लगाओ और उसको पावर दो. ओके. एंड विजुअलाइजेशन का जब पावर देते हो, ये कंबाइन हो जाता है. नाउ इफ यू सी योर बॉडी इज अ क्रिएटर. आप जितना अपनी बॉडी को ऑर्डर दोगे, इट विल लिसन टू यू. आई वॉन्ट टू स्टार्ट जिमिंग, बट इफ आई विल नॉट से टू माई बॉडी, how will it bring that change? If you want to start writing gratitude, if you want to stop complaining and criticizing, आप आपकी बॉडी को कमांड देना शुरू करो कि यस, अपने बॉडी को पकड़ के हाथ रख के अपने हार्ट पे, यस आई रियली वांट टू स्टॉप कंप्लेनिंग. ऑर्डर दे के देखो, यू विल सी दैट रिजल्ट्स इन योर बॉडी. बट हम क्या करते हैं, हम हमारी बॉडी को ऑर्डर ही नहीं देते. व्हेन यू गिव योर बॉडी or your mind that order, that I really want to stop complaining and criticizing. I really want to start getting up early. I want to start, getting up and do exercise. I want to start getting up early in Brahma Muhurat and do my gratitude practices. आप देखोगे आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी. आपकी बॉडी तब रिस्पॉन्ड करती है जब आप उसको ऑर्डर देते हो. सो लर्न टू गिव ऑर्डर. Here, as we express our gratitude, we must never forget that the highest appreciation is not to utter words but to live by them. आपको सिर्फ, अगर हम ये बोलेंगे कि हम सिर्फ वर्ड्स को ही बोलते रहेंगे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बट यू आर नॉट गोइंग टू फील इट, यू आर नॉट गोइंग टू लिव बाय देम, यू विल नॉट सी द रिजल्ट्स. तो आपको जो भी है ना, उसको जस्ट बोलना नहीं है, जस्ट कि हाँ मुझे बोलने के लिए बोला गया है तो मैं बोल रही हूँ थैंक यू. बट यू हैव टू फील दैट यू आर रियली अप्रिशिएटिंग कि यार मेरे पास खाना तो है, मेरे पास पीने के लिए ग्लास ऑफ वाटर तो है, मेरे घर में 24 घंटे पानी तो आता है, 24 hours आई एम गेटिंग वाटर, आई हैव अ बेड टू स्लीप, आई हैव इंटरनेट, आई हैव वाईफाई, आई हैव अ जॉब, I have a husband, I have children, I have a family, I have a house, I have a home where I can come and relax peacefully. At least that is there with you. So be thankful for that. So here she's talking about that in this book, there are 28 magical practices that have been specifically designed so that you learn how to use gratitude's magical power to revolutionize your health, money, job, and relationship. जो चाहिए आपको, health, मनी, मटेरियल, रिलेशनशिप, आपको सब मिलेगा.
and to make your smallest desires and your biggest dreams come true. छोटे से छोटा, बड़ी से बड़ी चीज आप पा सकते हो if you learn how to practice gratitude to dissolve problems and transform any negative situation. आपकी लाइफ जब आगे बढ़नी शुरू होती है, okay, when you start practicing gratitude, you will have more of challenges. आपको और challenges आएंगे, आपको और challenges आएंगे, and then you will see through this practices, if you have done this practices sincerely, you will see the results कि आप overcome कर पा रहे हो वो situations को, जो भी आपके life में challenges आ रहे हैं, whether it is your office challenges या relationship challenges, आपकी health में challenges आ रहे हैं, anything, you will be captivated while you read the life-changing knowledge, but without practicing what you learn, the knowledge will slip through your fingers, and the opportunity that you attracted to easily change your life will be gone. तो अगर आप सिर्फ ये अभी जो पढ़ रही हूं मैं, या आपको समझा रही हूं, if you are just going to listen to it and you're not going to practice what you learn, see, she says, but without practicing, the knowledge will slip through your fingers, and the opportunity that you attracted to easily change your life will be gone. Because ये practices आपकी पूरी life change करती है. It's a, it's a book which is teaching you how to live life. So to ensure this doesn't happen to you, you need to practice gratitude over 28 days so that you impregnate your cells and your subconscious mind with it. यानी 28 डेज को जब आप कंटिन्यूस प्रैक्टिस करना शुरू करते हो, आपको आपके बॉडी के सेल्स में वो प्रैक्टिसेस लेके आनी है, एंड देन यू विल स्टार्ट सीइंग द रिजल्ट्स, एंड ओनली देन इट विल चेंज परमानेंटली. और ये बता रहे हैं कि जो ये प्रैक्टिसेस है, दे आर फॉर 28 कॉन्सिक्यूटिव डेज, एंड आपकी हैबिट बन जाती है व्हेन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग. Practicing gratitude in a concentrated effort over consequential days guarantees that you will see the magic take place in your life and fast. I think Manju ma'am can explain to you this very well because she has been continuously with me. Yes, Manju ma'am, Yes, ma'am. can you just unmute yourself and speak about कि practicing gratitude in concentrated effort और continuous days का मतलब क्या होता है? Ma'am, whenever we practice gratitude for the continuous 28 days, it automatically becomes a habit of being in gratitude. Like जैसे हम morning when you wake up तभी से ही like we always say that I'm grateful that I woke up, या हम पानी पीते हैं, सब चीज के लिए हम grateful रहते हैं. एंड जैसे like छोटी सी छोटी चीजें, हर एक चीज के लिए वी आर ग्रेटफुल. एंड व्हेन, जैसे आपने बोला कि चैलेंजेस आते हैं, व्हेन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड तब ज्यादा चैलेंजेस आते हैं. सो इन वो लाइक आई हैव फेल्ट दैट कि बहुत सारे चैलेंजेस दे डू कम, बट एट द सेम टाइम वो अपने आप सॉल्व भी हो जाते हैं. Great. So that means practicing continuously. Concentrated effort क्या होता है? Means you are continuously practicing. Even after this book is done, you are continuously practicing for days to see the results. Because see, who wants magics for the whole life? Do you just want magic for these 28 days to happen to your life? Or you want ki continuous, you should have abundance in your life, you should have good health, you should have money flowing into your life. So if you practice continuously, you will start seeing the result. And with each magic practice, see here she's saying within each, very important, write down the sentence if you want. Within each magical practice is the wealth of the secret teachings that will expand your knowledge in tremendous ways. And in each practice, you will understand more and more about how life works and how easy it is to have the life you dreamt of. हमने लाइफ को सीरियस बना लिया है. हमारे मुंह पे स्माइल भी नहीं आती है. स्माइल, कम ऑन एवरीवन. Smile. When we are sitting in this class also, we are so serious. मैम, ये जो स्माइल है ना, ये इनिशियल 2-3 दिन नहीं आएगा, बट ऑटोमेटिकली 4-5 दिन के बाद आ जाता है. So the moment you start smiling, the moment you start remaining happy, see, happy, being in
happiness is the best quotient of to bring your dreams come true through these practices. Hello. So I can't hear you. Suddenly आवाज बंद हो गई. all others can hear me. Am I audible? Hello. Yes, ma'am. आ रहा है, आवाज आ रहा है. Simi ji, I can hear you. How come you are not able to hear me? There is some network issue from your end, I feel then. Just check your network, come into the network. So the first 12 practices, you use the magical power of gratitude for what you have now, okay? And for what you have received in the past. Because unless you are grateful for what you have now and what you have received, the magic won't work and you won't receive more. बट हम क्या करते हैं? कंप्लेन, ये नहीं है, वो नहीं है, पैसा नहीं है, घर नहीं है, टाइम नहीं है, राइट? कितना 24 आवर्स है बट फिर भी हम कंप्लेन करते, टाइम नहीं है. ओके, किसी ने कुछ बोल दिया तो हम बोलते यार, हम उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, एंड हम पूरी एक लड़ी लगा देते कंप्लेन करने की. एक चीज कम आ गई घर में, बाजार में, चलो स्टार्ट इमीडिएटली. Zepto people didn't send the order properly, start complaining. Husband didn't get properly all the groceries, start complaining. Okay? Mother-in-law ने कुछ बोल दिया, start complaining. बच्चों ने कुछ बोल दिया, start complaining. And what are we doing? हम complain कर करके हम उसको और बढ़ा रहे हैं. So here she is saying that हमारे पास अभी जो है, what good things you have good body, you have good health, you have good eyes, good hair, good skin. You know, at least you're getting salary on time. Some people don't get salary on time. They're working for the whole month, but their boss says कि अभी नहीं, 15 तारीख के बाद दूंगा. Right? So understand कि जो चीजें आपके पास है उसको अप्रिशिएट करो, उसको अप्रिशिएट करो. जो भी है, स्टार्ट वर्किंग राइट फ्रॉम नाउ. किसी she's saying that because unless you are grateful for what you have and what you have received, the magic won't work and you won't receive more. These first 12 practices will set the magic of gratitude into motion immediately. Okay? एंड पहले जो 10 लेसन हम करेंगे उसके अंदर आपको सिर्फ पास्ट के हम ग्रेटिट्यूड करेंगे ऑन दी हेल्थ, रिलेशनशिप्स, मनी, करियर, एवरीथिंग. The next 10 practices uses the magical power of gratitude for your desires, dreams, and everything you want. Through these 10 practices, you will be able to make your dreams come true and you will see the circumstances of your life magically change. And the last 6 practices take you to the whole new level. फिर जो last 6 practices आती है ना ये 28 days की, वो आपको लाइफ के अबव लेवल में लेके जाती है, where you will be saturating gratitude into every cell of your body and mind. फिर आप दूसरों को भी दूसरों की भी ड्रीम कंप्लीट करना शुरू कर दोगे. यू विल हैव दैट पावर दैट नाउ यू कैन गिव magic dust to the other people to heal. So you will learn how to use gratitude's magical power to help other people. Last में जो 6 practices हम सीखेंगे उसमें आप दूसरों को भी हेल्प कर सकोगे. You will help to dissolve problems, improve any negative situation or circumstance you may encounter throughout your life. बट अगर आपने ये सीखा ही नहीं, आपने बोला मैं आज अटेंड करती हूँ, मैं 2 दिन नहीं अटेंड करूंगी, जाने दो, फिर मैं परसों फिर अटेंड करूंगी, then you will not have the flow of that practices, and then you will see you will not achieve what you want. So you don't need to clear your calendar here, she's saying, because each of these practices has been specifically created to fit into your everyday life. आपको specially calendar create नहीं करना कि मैं इस दिन ये करूंगी. Whether it is work days, weekends, holidays, vacations, gratitude is portable. You can take it everywhere where you go, and then wherever you go, the magic happens. देखो, आपको ग्रैटिट्यूड तो करना है, ग्रैटिट्यूड तो बोलना है, तो आप अगर बाहर भी हो तो आप ग्रैटिट्यूड कर सकते हो, आप ऑफिस में हो तो ग्रैटिट्यूड कर सकते हो, आप ट्रैवल कर सकते हो तो ग्रैटिट्यूड कर सकते हो. सो इट्स पोर्टेबल. शी इज सेइंग ग्रैटिट्यूड इज पोर्टेबल, आपके साथ हर जगह पे जाएगा. If you miss a day, you will most likely lose the momentum of what you have done. And to ensure that you don't reduce the magic, if you miss a day, count back 3 days and repeat the practices again from there. तो अगर आप एक दिन की भी प्रैक्टिस मिस करते हो, आपको वापस से 3 दिन की प्रैक्टिसेस करनी है पीछे जाके.
Some practices are designed for morning and others are designed to do throughout the day. So read each day's practice first thing in the morning. Some practices will need to be read the night before because they begin when you wake. And I will tell you when to do this. You might want to read the next day's practice every night before you go to sleep in order to be prepared. If you do, make sure you reread the practice again in the morning. So if you don't follow the 28 magical practices consecutively, you can also use them in other ways. You could choose one magical practice that addresses your important subject in your life to change. So here she's saying that once you come into these practices, then a particular problem, suppose an example, if I am having a health problem, तो आई कैन यूज ओनली माई हेल्थ जो प्रैक्टिसेस दी गई है इसमें and I can just for a continuously for 1 week, I can just practice on my health so that I can improve my health. So here she's saying that you can do that. And after 28 days, once you have completed, you can use a particular practice to increase the magic where you have specific need, such as for health or money, or if you want to receive a dream job, आपको dream job चाहिए, have increased success, okay, in your work, improve relationship, or continue to practice the gratitude, you can open the book at random and we can do the practice. And we do this in the focus gratitude practices. So Yash is saying, can you overdo gratitude? Never. क्या आप ज्यादा कर सकते हो? ऐसे बोलते हो कि यार मुझे बहुत हो गया gratitude करना. No, you will always feel gratitude. Can your life become too magical? Hardly. Use the practices over and over so that the gratitude seeps into your consciousness. जब आप थैंक यू और ग्रैटिट्यूड को अंदर से फील करना शुरू कर देते हो, आपके कॉन्शियसनेस, योर हार्ट एंड योर माइंड आर बोथ कनेक्टेड विद ग्रैटिट्यूड. अगर मैं सिर्फ लिख रहे हो थैंक यू फॉर माई हार्ट, थैंक यू फॉर माई बॉडी, थैंक यू फॉर माई वर्क, बट आपको फीलिंग नहीं आ रही है, will it work? It will not work. So after 28 days, she's saying, you will have rewired your brain and implanted gratitude. जैसे हम सीड डालते हैं ना और फिर प्लांट उगता है, तो आप 28 डेज के बाद आप देखोगे कि आपने एक ऐसा पौधा लगा दिया आपके माइंड में जो फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड हो गया. ग्रैटिट्यूड इन योर सबकॉन्शियस माइंड, where it is automatically the first thing that comes to your mind in any situation. The magic you experience will be your inspiration, because as you incorporate gratitude into your days, they will be nothing short of spectacular. तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप डिफरेंस देखोगे. Now what are your dreams? We are coming today to understand कि we have just started the book. तो हमारे ड्रीम्स क्या है? Why have we come into this book? To understand कि how we can achieve our dreams. ड्रीम सिर्फ पैसे के होते हैं क्या? Come on, answer me. ड्रीम सिर्फ क्या पैसे के होते हैं? What are the different types of dreams? Come on, who will tell me? What are the different types of dreams we have in our personal lives? Come on. Unmute yourself and say. Interactive session, please. बोलो बोलो बोलो, जल्दी से बोलो. What type of dreams you have? You don't have any dreams? You don't have any dreams? I need to achieve something. Yeah, but what? That is I'm asking कि what are हमारे कौन से टाइप्स के ड्रीम्स होते हैं? Just to get money is one dream or what? No. कि बस मुझे मेरे पास पैसा आ जाए? Is that only the one dream? No. Ma'am, finance, health, relationship, children's well-being, Yes. and spiritual upgrade. Yes. Yes. So there are so Uh, many dreams in the different areas. सिर्फ पैसे का ड्रीम नहीं रहता है. So here she's saying many of your, what are your dreams? Many of the magical practices are designed to help you to achieve your dreams. तो ये जो practices है, they help you to achieve your dreams. So therefore you need to get clear about what you really want. Sit down with the computer or pen and paper, and we always say write in your journal and not on computer or on your phone, and make a list. Make a list of what you want. Okay, what you want in every area of your life. Think through every detail of what you want to be,
to do or have in your life. See, again, I'm repeating this. Think through every detail of what you want to be, what you want to do, and what you want to have in your life, in your relationships, career, finances, health, and every area that is important to you. You can be as specific and detailed as you like, but remember your job is to be simply to list what you want. तो आज हम फॉर्मेट नहीं सीख रहे, आज हम सिर्फ बेसिक सीख रहे हैं कि हमको लाइफ में क्या क्या चाहिए. पहले क्लैरिटी तो आए हमारे माइंड में. बहुत सारे लोग बोलते हैं आई वांट टू, लाइक Akshata ma'am said, I want to achieve something, but what? Are you clear with what you want in the life? So that is very important. So today you can be as specific and detailed as you like, but remember your job is to simply list what you want, not how you're going to get what you want. आपको वो टेंशन ही नहीं लेना है कि मैं तो इतने सारे ड्रीम्स लिख रही हूँ, बट वो आएगा कैसे? अभी तो मेरे पास 100 रुपीज भी नहीं है, and I am thinking of opening a business, right? So the how will be done for you when the gratitude works its magic. You don't have to think about it. आपने देखा होगा कि if you want a better job or your dream job, then think about everything you want the job to be. Think about the things that are important to you, such as the type of the work you want to do, how you want to feel in your job, the type of company you want to work for, the kind of the people you want to work with, the hours you want to work, the where you want to work, what the salary you want. तो आपको very clear होना, अगर मुझे job चाहिए, that is my dream, कि मुझे मेरे dream job चाहिए, तो you should be very clear. अगर मैंने सिर्फ बोला I want a good job, with 50,000 salary, but that 50,000 is making you slog from morning 9 o'clock till night 9 o'clock. So is it worth job for you? So whenever you write your dream, you have to be very clear what you want, what you really want in your life. If you want a job, आपको जॉब में क्या क्या चाहिए, कैसे टाइप की कंपनी होनी चाहिए, कितने आवर्स आपको काम करना है, कंपनी घर के नजदीक होनी चाहिए, सो दैट इट इज इजी फॉर यू टू ट्रैवल, आपको ट्रैफिक में नहीं जाना पड़े. तो यू हैव टू थिंक अबाउट एवरीथिंग, गेट वेरी क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट इन द जॉब बाय थिंकिंग थ्रू द डिटेल्स एंड राइटिंग ऑल द डिटेल्स डाउन. शी स्पेसिफाइज राइटिंग ऑल द डिटेल्स डाउन. अगर आपको पैसा चाहिए, आपको घर चाहिए, अगर आप you want money to educate your children, okay, work out the details of their education, including which school you want your children to attend, the cost of the school fees, the books, the food, the clothing, transport के लिए कितना पैसा लगेगा, उनके यूनिफॉर्म के लिए कितना पैसा लगेगा, and then you write your dream so that you know exactly how much money you will need. And if you want to travel, then write down the details of the countries you want to visit. How long you want to travel? मैं 3 दिन के लिए जाना चाहती हूँ, 5 दिन के लिए जाना चाहती हूँ. What you want to see? कौन से places देखना चाहती हूँ, कौन से type का food खाना चाहती हूँ वहां पे. Okay, where you want to stay? कौन से means you want to travel? You want to go by flight, train, bus, whatever it is. If you want a perfect partner, अगर आपका dream है कि I want a perfect partner, then write down every detail and the characteristics you want that person to have. If you want improved relationship, अभी already आप relationship में हो, आप already married हो, आपके relationships है, write down what you want to improve in your relationship with your husbands, with your in-laws, with your boss, with your colleagues, friends, everyone, and what you want them to be like. So if you want more health or an improved bodily condition, be specific. अगर आपकी health में कोई issue है, and you want something very good, मुझे perfect शिल्पा शेट्टी वाला figure चाहिए, I want a flat stomach, right? I want this type of figure. I want to wear, because why? I want to wear good clothes. I want to wear one piece. Okay, so be specific about what ways you want to improve your health or body. If you want a dream home, then list every detail of what you want the home to be, the room by room. Sorry. If there are specific material things you want, like car, clothes, appliances, write them down. Okay, if you want TV, if you want mixer, if you want to bring juicer at home, right? If you want to achieve something
such as passing an exam, getting a degree, or a goal in sports, succeeding as a musician, doctor, writer, actor, scientist, business person, or whatever it is you would like to achieve, write it down and be as specific as possible. Why she बुक क्यों बोल रही है स्पेसिफिक क्यों होना है? देखो मैंने ड्रीम लिख दिया कि मुझे घर चाहिए, मुझे 3 BHK का घर चाहिए, और आपने मैनिफेस्ट भी कर लिया, बट उस घर के आजू बाजू में इतना कूड़ा कचरा है, या उस घर के आजू बाजू में इतना नॉइज होता है, या देर आर नॉट गुड नेबर्स अराउंड दैट हाउस, विल दैट हाउस बी यूजफुल टू यू? आपने मैनिफेस्ट तो कर लिया. So that is why she says कि be very specific about what you want. आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए in every area, in relationship, in perfect partner, in your health, in your home, every detail you need to write it down. What you want you from your clients. If you want more clients, you have to write, I want more clients. And from that clients, what type of business you want, कितने पैसे का business चाहिए, you have to write all that. Promotion चाहिए तो you have to write about your promotion, what type of promotion you want, what type of package you want in that promotion, what type of cabin should be there if you are promoted to some position, what type of position you want, what type of cabin you want, what type of people you want under your team if you are going to get that position. Otherwise it is useless. You reach to that position but it's not up to your liking. So you have to be very clear about what you want. So today we are going to write our dreams. I would strongly urge you to find the time to maintain a list of your dreams throughout your life. Okay, आपको देखो हमारा dreams जो होते हैं ना, there are short dreams, there are long dreams, okay, and there are future dreams. Remember, हम ऐसा सोचते हैं ना कि when I become at the age of 45 or 50 and when I retire, I should have this much money that I can relax, I can spend, I can travel, I don't have to think about it. So that becomes your future dream, your future goal, okay? So write down the little things. She says, I strongly urge you to find the time to maintain the list of your dreams throughout your life. And write down the little things, the big things, then what you want at this moment. आपको अभी इस moment में क्या चाहिए? What do you want at this moment? This month? और this year क्या चाहिए? May month going on. By the end of today's Purnima, full moon day, very nice day. आपको by the end of this month क्या चाहिए? Today when you write your dream, it gets fulfilled very fast. Every time, every full moon, whatever my dream is there, I write 33 times for 3 days, my dream. I set it one go and I write my dream for 33 days. Today, I write it tomorrow and day after. Because the full moon day से लेके आपके 3 days तक, the energies are very high. I do that practices also. So she's saying कि as you like at this moment आपको क्या चाहिए? By the end of this month, in May month, what do you want? क्या goals आपके accomplished होने चाहिए? You can write that also. So as you think of more things, add them to the list. As you receive things, I had written, I want more happiness. I had written, I want more time, to do my gratitude practices. This is also your dream, right? I had written, I want to get up early in the morning at 3:34 and, I want to start practicing. That is my dream. So see, what is your dreams? As you think of more things, add them to the list. And as you receive things, cross them off the list. An easy way to do the list of what you want is to divide into the categories of health and body, career and work, money, relationships, personal desires, and material things. And then just add the things you want to each category. When you get clear about the things you want, you are giving a definite direction to the way you want gratitude's magical power to change your life, and you are ready to begin the most exciting and thrilling adventure you have ever been on. So tomorrow we will go into the main chapter, or the main practice starts from tomorrow. Count your blessings. But today we are going to take your journal, complete one page. First page, you write down your health and body. Okay.
I will give you more topics also. You can add in more topics also. मैंने और कुछ भी लिखा था मेरी बुक में. You see what you can write. Health and body के लिए पूरा एक पेज छोड़ो पहले and now start writing just now. And you're not going to write in the thank you format. You're just going to write, I want a fit body of this kg. Okay. If you have any health issue, so you want to be fit, right? If you have any BP problem, you have any sugar problem, I do not say it, but today I'm just sharing it. I usually say health breakdown. Okay. We do not use the word, sugar, diabetes, all that, because then you start owning. What do people say? I have diabetes. What does that mean? I have diabetes. Think and just tell me, someone unmute and tell me, if I say I have diabetes, what am I saying? Almost you accepted it. Yes, accepted what? I started owning it. जैसे हम बोलते हैं, I have a home. You started accepting your body. You're telling that I have diabetes. You are owning your diabetes. You're owning your BP. You're owning whatever disease you're having. So you should be very careful of the words you use. You should always say, I have a health breakdown. Don't say that I have diabetes. किसी को भी जाके, I have BP. I have sinus problem. You're owning that problem. Why you want to own? हमको own नहीं करना है. Understand? We have to speak. Is when you start owning, it comes into your body. It will permanently stay. Right? So don't speak about those words कि I own my, this disease. अभी health and body के लिए ये लिख लो. You want strong knees, lower back pain है, तो आप you want to heal your lower back pain. So I want my lower back pain to heal. Okay, I want my stomach should be flat like Shilpa Shetty so that I can wear sexy clothes. ये भी लिखना है साथ में. Why do you want? See, if I want a fit body, because I can run 2 kilometers. I want strong knees and lower back so that I can run. Okay. आप लिखो इस तरीके से लिखो. Second page पे जाओ and then there you're going to write career and money. What do you want in your career? और पूरा पेज छोड़ देना है क्योंकि आगे आगे आपकी लिस्ट आते जाएगी. एक पेज छोड़ दो पूरा. Full page, Fullscape book का पूरा पेज छोड़ दो. If you're writing in a small book, then you leave 2 pages. Next is your career and work. Okay, जितने ड्रीम लिखने आप लिख सकते हो. There is no list कि आपको एक ही लिखना है, 2 ही लिखना है. आज जो हम लिख रहे हैं ना, then I will tell you how to work on your dreams. But today आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे क्या क्या चाहिए मेरी हेल्थ में. Okay, I want good glowing skin. I want long hair. Isn't that your dream? होता है ना. We want to look good. Why not? I want to look slim and fit even if I'm at the age of 50 or 60s. So write down that whatever is your dream, write down that. Okay, I want to be fit. I want to be fit and healthy. If you have any health breakdown, then write that you have already healed. I want to heal my lower back. I want to heal my sinus problem. I want to heal my sugar problem, whatever it is. Career and work. Take another page now. Write about career. Ma'am? Yes. Yeah, so before this, you told that we have to write any dreams we have, so that we have to write very specifically, right? So now, for example, I want a dream that I want to buy a 3 BHK apartment or something like that. And I have written that dream. And later I got to know, okay, along with that, one more thing I wanted to add. Later, can I add to the same dreams? No, for example, the 3 BHK should be peace and in a something like. Yes. Yeah. You just write I want a 3 BHK house, which is very, airy, breezy, or in which locality you want, which area you want. Currently, you No, can write everything. that. No, everything
the same moment I am not able to have that, right? Later, after some time, after writing that, Yes, later I we will come to it. We will come to it on the day 13th chapter when we will come. That time you will write your dream specifically. Today it is just that आपको क्या क्या चाहिए, पहले थोड़ी क्लैरिटी आनी जरूरी होती है. तो आपको लाइफ में क्या क्या चाहिए अभी, ओके? उसकी क्लैरिटी आने के लिए आपको आज सिर्फ लिखना है कि आई वांट 3 BHK हाउस, फिर आई वांट अब लेटर ऑन आई वांट अ बंगलो. In that house I want good furniture. Later you can add in more. आप अभी currently सिर्फ लिखोगे ना कि I want 3 BHK house, so that we all have good space to stay. आपने सिर्फ इतना भी लिखा आज, I want a 3 BHK house so that we all have good space to stay. The whole family members is having good space to stay. Even that much is enough today. Then specifically हम detail में जाएंगे. Then about career and work, same thing you're going to write. You're going to write what type of job you want if you're looking for the new job. In your current job, if you want promotion, then you're going to write, I want promotion in my job with the salary package of this and this position. I want के format में आप लिखोगे. जो भी आपको काम चाहिए, अगर आप काम नहीं भी करते हो, सपोज आई एम हाउस वाइफ, ओके, आई एम अ होम मेकर, so still I can have dreams na ki I want that my house should stay clean every time. I should be that efficient, that I keep my home clean and organized, or my children should give me this much money that I am able to spend, to get few things, materialistic things at home. तो आप ये भी लिख सकते हो अगर यू आर एन होम मेकर. इफ और कोई क्वेश्चन माइंड में आ रहा है तो प्लीज आस्क मी, बट गेट क्लैरिटी. सो करियर एंड जॉब में जो जो आपको चाहिए ना, आप खाली लिखते जाओ. आई वॉन्ट कि आई सैलरी पैकेज शुड बी दिस मच, आई वॉन्ट दिस पोजिशन, आई वॉन्ट दिस टाइमिंग्स ऑफ माई वर्क. वो भी लिख सकते हो. दैट इज योर ड्रीम कि भाई मेरा काम मुझे सिर्फ इतने ही घंटे होना चाहिए कि 9 to 5 आई एम वर्किंग, by 6 o'clock I'm at home, so I'm getting more time. So that means you're looking for more time with your family, okay, for your other personal things to do. तो आपको specifically लिख देना है. If you want to become a public speaker, what you want to become, you want to become a good driver, you want to become, you can write that also. Ma'am, I have a question. Yes. Ma'am, sometimes my thoughts are very limited, right? Because I can only think so much. But then God is willing to give more. So why should I even put a restriction saying like मुझे 1 crore चाहिए when he is planning for a big farm, right? So easily I feel I'm contradicting myself. Like sometimes what comes to me is better than what I wish for. See, you have to write what you want. What is your desire? Your desire is suppose 1 crore. Okay. Example, I want 1 crore by the end of 2025 year. Okay. By December 2025, I am hoping to make 1 crore. If this is your goal, okay, you have that goal in your mind. But see, God will always give you what He knows is best for you. But He does not say that you don't dream big. Because when you don't dream, you'll not make an effort. तो वो अपने आप थोड़ी देगा. He will not give you on his own unless you have told universe, I want this. चलो God बोलेगा, you want 1 crore, but you're telling him, we'll come to the 13th chapter, that time we write in detail why I want the 1 crore. So when God knows you have written your needs for what you want that 1 crore, and if he feels right, he might give you 2 crore also. Ma'am, sometimes ऐसे भी हुआ, like whatever I asked he gave, because I asked he gave, and I was like, oh, मुझे ये नहीं चाहिए था. It's like that also, right? So I was like, maybe it's better if I don't make a wish, and जो भी वो देगा is better. I have had like so many instances where I was like, क्या मैंने wish किया?
See, this concept of magic works when you specifically tell universe कि I want this. Okay? But if you have contradictions in your mind and if your logical mind is more dominant, then you will not be able to achieve it. मैम ये प्रैक्टिकल बोल रही हूँ नहीं जो हुआ. See, what you are saying is कि मुझे ऐसे लगता है जो भगवान देगा मुझे चलेगा. Okay? That means you don't have any wish. That means it says that you don't have any wish, you don't want any dream. अगर आपके मन में कोई थॉट भी आता है ना कि आई वॉन्ट दिस मच मनी, इट इज द यूनिवर्सल सीड विच हैज कम इनटू योर माइंड. इट डज नॉट कम डायरेक्टली फ्रॉम माय माइंड. जो चीज आपके लिए ऑलरेडी सी अंडरस्टैंड टुडे द कॉन्सेप्ट, जो चीज ऑलरेडी यूनिवर्स में आपके लिए रेडी बनी हुई है, हमको दिख नहीं रही है. हमको दिख नहीं रही है बिकॉज वी हैव नॉट रीच्ड आवरसेल्व्स देयर. बट वो थिंग इज ऑलरेडी देयर, तभी जाके ही वो डिजायर अपने अंदर आती है. नहीं तो वो अगर आज मुझे बोलोगे तो मुझे कार की डिजायर नहीं है. ओके, आई डोंट हैव कि मुझे बड़ी कार चाहिए, मुझे इतनी बड़ी कार होनी चाहिए, या मेरे पास ड्राइवर होना चाहिए, या मुझे वो डिजायर नहीं है. बिकॉज इट इज नॉट कमिंग, इट इज नॉट कमिंग टू मी. दैट मीन्स इट इज नॉट देयर इन रियलिटी फॉर्म. बट जो डिजायर आपके मन में आती है ना कि यस आई वॉन्ट दिस, that is already there in reality. It is already made in the universe. It is already ready in the universe. The universe wants to give you, and that is why that desire has come inside you. So the desire comes only when the universe has already built that thing for you. Okay, got it. हमको जो चाहिए, it is already there. See, understand this book's concept. ये बहुत deeper concept है कि जो हमको चाहिए वो already दुनिया में available है. It is already available for us, but we have not reached our level till there to see that in reality. What does reality mean? कि उसको physical form में हमको नहीं दिख रहा है. क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि हम उस level तक spiritually, knowledgeably, we have not reached that level, and that is why we are not able to get that. But universe के पास तो abundance है. He has already made things available to us in abundance. हमको ऐसे लगता है कि नहीं है. I cannot reach there. I am the creator. Understand? He says कि आप परमात्मा के अंश हो. मैं परमात्मा का अंश हूं. उसका मतलब क्या होता है? I am the creator of my own life. और हम क्या करते हैं? हम गलत काम भी कर लेते हैं और फिर हम दूसरों को ब्लेम करते हैं और भगवान को ब्लेम करते कि तेरी वजह से ऐसे हुआ भगवान, तूने मुझे ये नहीं किया भगवान, तूने मुझे वो नहीं किया भगवान. हम ऐसे ही बोलते रहते हैं. बट यूनिवर्स वांट्स, ही क्रिएटेड अस दैट वे. व्हाई ओनली ह्यूमन बीइंग इज सच अ स्पीशीज व्हिच हैज इंटेलिजेंस? why there are so many inventions and discoveries happening? If he didn't wanted, तो उन्होंने तो हमको, भगवान ने तो हमको मंदबुद्धि बनाया होता, जानवर के जैसे बनाया होता. जाओ भाई इधर उधर फिरो, खाओ पियो, मस्त रहो. But he made us, he gave us a brain which is very intelligent. He has given us subconscious mind because he wants us to create. He wants us कि भाई जो मैंने दुनिया में दिया है उसकी तरफ आप हाथ बढ़ाओ. जो मैंने दुनिया में आपको दिया है, इट इज ऑलरेडी देयर. हमको वो दिखता नहीं है. सी देयर आर टू रियल, हम बोलते हैं देखा और अनदेखा. फिजिकल रियल में हमको, देयर इज इनविजिबल रियल जिसमें ऑलरेडी दीज थिंग्स आर अवेलेबल. अंडरस्टैंड? इनविजिबल रियल में दीज थिंग्स आर ऑलरेडी अवेलेबल. बट उसको फिजिकल रियल में लाने के लिए वी हैव टू बी इन ग्रैटिट्यूड एंड मेक आवर ड्रीम्स ट्रू. But whenever God gives you, he will give you what is required. So whenever he wants to give you, he will always give what you require. There are times when I have manifested 6,000 rupees also. मुझे 5,800 rupees आए.
Okay, I have written 6,000 rupees I want for this, पर मुझे 5,800 rupees भी आए हैं. So God knows कि हर मेरा तो उसमें चल जाएगा. That is why he gave me only that much, not 200 rupees less कर दिया. But I reached my dream of 6,000. Right? I manifested that dream of 6,000. So that is how it works. Next is money. अब मनी के एरिया में आपको कितना पैसा चाहिए लिखो. I want 50K every month in my account. I want passive income. You know, बैठे बैठे पैसा आए, फिक्स डिपॉजिट से आए, म्यूचुअल फंड से आए. You want rental income. You want what you want. आपको कितने sources of income चाहिए? You can write that. You want to purchase a shop. You want to purchase some jewelry. So you need money for that. So you can write, I want money to flow in my account for buying this. Specific लिखो per amount. कि I want 50K every month in my account. You know, या मेरी सैलरी अकाउंट में इतने पैसे हर महीने आने चाहिए कि मैं मेरे पार्लर के एक्सपेंसेस में, मेरे घर के एक्सपेंसेस, मेरे ट्रैवल के एक्सपेंसेस ये कर पाओ. If I want to learn some new courses, I can put money in that. और इफ यू फील कि हाँ मेरे यानी सब खर्चा होने के बाद भी मेरे सेविंग्स अकाउंट में हर महीने 10,000 20,000 बचने चाहिए, यू कैन राइट दैट ऑल्सो कि देयर शुड बी 20K 30K यू नो इन माय सेविंग्स इन माय अकाउंट एवरी मंथ. राइट दैट ऑल्सो. डिपेंड्स व्हाट यू वांट. खुल के सोच समझ के लिखो. अपने आप को क्वेश्चन पूछो, Maria, what is that what you want in the life? Maria, how much money do you want in your life that will give you a fulfilling and a balanced life? And ask yourself like that. Close your eyes for 2 minutes. Ask yourself that question and then write. Today also, if you feel afterwards also, after the session also, tomorrow morning also, if you feel that I wrote this, I shouldn't have written this, I want to write this, you are still free to go and cut that and write a new dream list in that. Maria, I just wanted to ask you that do the wishes have to be your own personal wishes also, or could you wish for somebody else as well? You can wish for somebody else also. Okay, thank you. You want your children, you want money for your children's education, you want your child to get a good job. Okay, you want to travel with someone else, or you want someone else's health to be good. That also could be a dream. Currently, we are not focusing on anything. It is just that what you want in the dream. क्योंकि आपको पहले क्लैरिटी आनी बहुत जरूरी है कि मुझे ड्रीम में क्या चाहिए. Yash is saying when you get clear about the things you want, you are giving a definite direction to the way you want gratitude's magical power to change your life. And you are ready to begin the most exciting and the thrilling adventure you have ever been of. So she says, when you get clear of the things you want, you are giving a definite direction to the way you want gratitude's magical power to change your life. देखो, अगर आज मेरे दिल में ऐसा आया कि मुझे ये gratitude sessions people को देने चाहिए, I should reach out to people. Don't you think it was universe, Dean? Universe had already created that thing for me. That is why it came into my mind. नहीं तो नहीं आता था ना. Right? I was living my retired principal ka life, enjoying, doing everything. But why did this thing come into my mind? Now also, I just say कि God give me more happiness. मेरा dream ज़्यादा यही रहता है. I never run behind money. मैं ऐसे बोलती हूँ, God give me that much happiness कि मैं मेरे जो last के years है ना, I just enjoy to the यानी जो मैंने चीजें नहीं कर पाई हूं ना मेरे इतने सारे years में, I do all those things and I go before I die. That is my dream. For my health, I say कि yes, I should have fit and energetic body that I'm able to travel different places. कि मैं dance कर रही हूँ till I die, I'm dancing.
because I love dancing. So that is my dream. But if you have people, you have responsibilities to complete, you have responsibilities for your children. Yes, definitely you can write for your children. Next, go to relationships. अब relationship में आप what do you want in the relationship? आपके current relationship में I want good communication with my children. I want good communication with my husband. If you want a partner, then you have to write that I want a good new partner, with all the qualities which I am looking for. अगर आपका बेटा आपकी बात नहीं सुनता है और आप चाहते हो कि आपका बेटा आपकी बात सुने, तो write that. I wrote that my children should be very open and good in communication, and they should freely communicate with me in relationship. I should have good friendships in my life. You see what you want. I should have good relation, respect. What you want, that your children should listen to you, your family members should take your opinion. You can write that. You should have deep friendship with new people. Write that. Relationship में बहुत बड़ा एरिया देखो. रिलेशनशिप yesterday we spoke कि how relationship help you to grow. तो आपके रिलेशनशिप में आप देखो क्या क्या चाह रहे हो कि मेरे बच्चों के साथ में मेरा रिलेशनशिप हमेशा अच्छा रहे, अंडरस्टैंडिंग रहे. They should be good in communication. They are communicating with me in a very deep manner and they are very open and free with me. My communication with my boss should be very clear and good. My communication with my colleagues should be very open and understanding. My relationship should be very good with my boss, with my colleagues, with my friends, with my in-laws. जो भी आपको चाहिए आप लिखोगे. I want my relationship with my colleagues that it should be very good and my work environment is good. I want that I'm able to communicate with both my children freely and open with open communication. This should be my dream in relationship. आप देखो आपका क्या ड्रीम है in relationship, what you want. If you want a new partner, you're going to write for a new partner. I want a new partner. I want good friendships with people. After relationships, if you are finished, जितने ध्यान में आ रहे आपको लिखो. 4 लिखो, 5 लिखो, 6 लिखो. मेरे फ्रेंड्स के साथ में I should have good relationship. I should be respected in my friend circle. This is what you want in relationship. ना relationship में और क्या होता है? There should be love. There should be connection. There should be bonding with my family members. Right? हम क्या चाहते हैं हमारे हस्बैंड के साथ में हमारा रिलेशनशिप अच्छा हो, मेरे बच्चों के साथ में मेरा रिलेशनशिप अच्छा हो, मेरे जो रिलेटिव्स है उनके साथ में मेरा रिलेशनशिप अच्छा हो. If you feel that there is some relationship which is not good, so you want that relationship to be very good, so write down I want this relationship to be very good, open and understanding. उस रिलेशनशिप में आप चाहते क्या? Come to the next. आपका पर्सनल डिजायर्स एंड पूरा पेज पेज छोड़ देना है हर एक इसके लिए. 1 full page. After writing, leave the next page, because you are going to add in the list day by day till we are finishing the first 12 chapters. आपको और कुछ भी याद आएगा कि आपको और ये चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए. बिकॉज when you enter into the first chapters ना, you will realize कि अरे यार ये ड्रीम तो नहीं था मेरा, मुझे तो ये ड्रीम होना चाहिए. ओके, यू कैन राइट दैट. फिर अभी पर्सनल डिजायर्स में आपको क्या है? What are your personal desires? You want to reach some level in some course. Okay, मुझे जैसे केबीसी की हॉट सीट पे पहुंचना है, तो दैट इज माय पर्सनल डिजायर. आप देखो आपको क्या है पर्सनल डिजायर्स में, आपको क्या है? राइट डाउन दैट. You want to drive some car, you want to ride some bike, you want to learn some swimming. That is your personal desire. कि मुझे जिम जाना आना चाहिए, या मुझे एक्सरसाइज करने को आना चाहिए, या आई वांट टू लर्न स्विमिंग, आई वांट टू लर्न डांसिंग, मुझे भरतनाट्यम सीखना है, या मुझे सिंगिंग सीखना है, मुझे बेली डांस सीखना है. ओके,
or you want to travel to the most expensive places, you can write that those places. So these all come into your पर्सनल डिजायर्स. आपका जो भी ट्रैवल है, आपको कहाँ का ट्रैवल करना है, आप वो लिख सकते हो. That comes into your personal desires. Maybe you want to learn, you know, something. Your maybe holy ग्रंथ you want to learn. होता है ना, कभी हमको होली स्क्रिप्चर्स भी होता है कि मैं पूरा होली स्क्रिप्चर्स कंप्लीट करूं, तो you can write that. Like I had written in my personal this thing, I want to learn Arabic speaking also. I can read Arabic, but I want to learn now Arabic speaking also. तो आप देखो आपको कौन सी नई लैंग्वेज सीखनी है, पर्सनल डिजायर्स क्या है, आपको कोई कोर्स करना है, कोई वर्क, सम लेवल ऑफ लर्निंग यू वांट टू गो टू लर्न समथिंग एल्स. व्हाट इज योर पर्सनल डिजायर? स्पिरिचुअल ग्रोथ, वो भी एक पर्सनल डिजायर में आती है कि भाई मैं रोज 1 घंटा मेडिटेट कर पाऊं. दैट ऑल्सो कम्स इनटू योर पर्सनल डिजायर्स, राइट? 15 मिनट्स तो मैं कर लेती हूँ, आधा घंटा तो कर लेती हूँ, बट मेरा पर्सनल डिजायर में ये कि मैं इतना तो घंटा कर लूं, 1 घंटा तो मैं कर लूं. तो पर्सनल डिजायर्स कैन बी एनीथिंग. कि आई कैन रीच आउट टू पीपल, आई वांट टू एनहांस मोर अदर पीपल्स लाइफ. That what I had written in my personal desire, that I want to enhance more people's life. So you see what is your personal desires. और फिर लिखने के बाद जितने भी आपके मन में आ रहे, 5 आ रहे, 6 आ रहे, 10 आ रहे, पूरे लिखो. There is unending list of our desires. Write it down. At least you will know कि yes, आपके मन में ये desire है. You reminded, Priya ji, you reminded me of one Punjabi line. तेरा भाना मीठा लागे. That means कि I want this desire, but whatever you give me, I like that. So it's good actually, but clarity of your own desire direction, because this helps you to reach your goals. It is very important. I always say that that is why I always say, may God give you all that you require. Why I say that? Because God knows कि हमको क्या चाहिए, तो वो वही देगा. Right? और ऐसा होता है ना, एक बच्चा जिद करता है कि नहीं, मुझे मोबाइल फोन दो, मुझे मोबाइल फोन दो, मुझे मोबाइल फोन दो, मुझे गेम खेलनी है, मुझे गेम खेलनी है, मुझे गेम खेलनी है. आखिरी में मम्मी क्या बोलती है, इतना जिद करता है, चल यार मैं आज दे ही देती हूँ इसको, खेलने दो. सेम वे द यूनिवर्स डस, सेम वे गॉड डस टू अस. इफ यू से कि यस आई वांट दैट, आई वांट दैट, तो अगर उसकी मर्जी नहीं भी रहेगी ना, तो भी वो देता है आपको. ही सेज यार ये तो मेरा बहुत प्यारा बच्चा इतना ग्रेटिट्यूड कर रहा है और ये मांग रहा है, तो इसको तो मैं ना बोल ही नहीं सकता, क्योंकि इसने मेरे ऊपर विश्वास लगा दिया है. वो बोलता है ना, हम जैसे वो पता है लॉटरी लगाते हैं या घोड़ों की रेस के ऊपर वो जो नंबर लगाते हैं ना कि ये तो जीतेगा ही जीतेगा, वो जब कार्ड्स गेम पे खेलते हैं वैसा. तो वैसे जब हम यूनिवर्स पे अपना बिलीफ टिकाते हैं ना कि यस ये तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा, भगवान बोलता है यार ये तो मेरा बहुत प्यारा बच्चा है, ये इतना शुक्र करता है, इतना शुक्र करता है, इसको मैं नाराज कैसे कर दूं. इसको तो मुझे जो चाहिए वो देना ही देना है. एंड वो देता है फिर. इन पर्सनल डिजायर्स इफ यू आर फिनिश, मटेरियल थिंग्स में लिखो क्या चाहिए. कार चाहिए, बाइक चाहिए, ज्वेलरी खरीदनी है, सोना खरीदना है, सोने का सेट खरीदना है, चेन खरीदना है. मैंने लिखा था चेन, मेरे मेरे लिस्ट में मार्क भी है रेड पेन से. टीवी आ गया है, मेरा गोल्ड चेन आ गया है. vessels I wanted to buy for the kitchen, new one which I did. So you see what you want. आपको material things में क्या क्या चाहिए. Priya ji, you don't want anything. You're not writing. I will write, ma'am.
I will write. I'm just processing what you're saying. I will write now. Write it because writing will give you a clarity. Material things के अलावा भी और आपको ऐसे मन में कुछ आता है, you can write that also. She says, and then just add the things you want to each category. और उससे ज्यादा भी अगर आपको और कुछ भी चाहिए, जो इस कैटेगरी में नहीं आता है, आपको ऐसे लगता है पर मुझे ये चाहिए, you want clothes, you can write clothes. मेरे पास रोज एक अलग कपड़े होने चाहिए. Material things in the sense the things that we require, that one, ma'am. Yes, material things में आपका, you want shoes, you want purses, you want automatic car, what you want? You want घर का some wonder chef का juicer, mixer, what you want? In material things, you want jewelry, that also comes. You want artificial jewelry, you want gold jewelry, specified. You want TV at home, बड़ा टीवी लाना है, वो लिखो. आपको क्या चाहिए? आपको लैपटॉप चाहिए खुद का, वो लिखो. राइट? आपके ड्रीम में आपको क्या चाहिए, आपको वो लिखना है. दैट इज हाउ वी राइट ड्रीम्स फर्स्ट, बिकॉज हमको क्लैरिटी आनी बहुत जरूरी है पहले कि हमको हमारे अंदर में डिजायर्स क्या क्या है. और आप देखोगे आगे चलते 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 ये डिजायर्स में से भी आपकी और डिजायर्स दूसरी हो जाएगी एंड यू विल से नहीं, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है. पहले आगे चलते चलते ये जर्नी में ये होता है. तो आप देखोगे आपकी खुद की डिजायर्स आगे जाके चेंज हो जाती है लाइफ में. लाइफ में क्या, यही महीने में जब हम ये जर्नी कर रहे हैं. बट gratitude teaches you how to face challenges. Gratitude teaches you how to change negative situations. Okay? Because today, like I just heard one person saying to me कि यार तू चैरिटी बहुत करना चाहती है, बट डू यू हैव दैट इनफ टू डू चैरिटी? तो मैं सोच में पड़ गई. बट देन आई सेड यस, मुझे ऐसे लगता है कि आई कैन डू चैरिटी, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है. तो शी सेड नहीं नहीं, पर तुझे तुझे अभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी नहीं हुई है, तो हाउ कैन यू थिंक अबाउट दैट? तो आई से कि I have decided a part of every month कि a part of this is really going to go into charity. So I can do charity. It depends upon कि आपका mindset क्या बोलता है. आपका mindset अगर happy है उसको देने में, without thinking कि हाँ ठीक है यार, जो भी है आगे हो तो जाएगा, यूनिवर्स है, then it happens. But अगर आपके मन में ही नहीं है, वो फिर नहीं होता है. The more you practice gratitude, the more you achieve things. And you will achieve only things जिसमें ऊपर वाला राजी होता है, वही चीज आपको मिलती है. He might take your test, he might give you test. टेस्ट तो होता ही है, ये you have to be mentally prepared. और ये हमने खुद भी देखा है. We face challenges, right? और हम जितना ग्रैटिट्यूड में आते हैं ना, तो ऊपर वाला और बोलता है, अच्छा तो सच में शुक्रगुजार है, जरा देखते तो है इसको हिला के. एंड फिर वो हिलाता है हमको, वो परीक्षा लेता है. और जब आप उस टाइम पे भी ग्रैटिट्यूड में रहते हो ना, जस्ट नाउ ऑल्सो लाइक मेरी फ्रेंड ने मुझे कॉल किया, यार मेरे साथ जरा डॉक्टर के पास चल. बट आई एम रियली टेलिंग यू, मेरा मन नहीं था जाने का. बट आई स्टिल टोल्ड हर कि अच्छा ठीक है यार, चल मैं आती हूँ, बट मेरा देख 8 बजे सेशन है. बट अंदर से ना मेरा थॉट में क्या आया, आई रियली डोंट वांट टू गो यार. I want to sit and write gratitude. Today is Purnima. मेरा टाइम चला जाएगा because today तो I am in full day in gratitude writing practice till night. I practice till 12:31. I sit today and do my meditation and everything. अब मैं इसके साथ गई तो मेरा टाइम, and that just thought came, यार God, I really want to do my practices. मैंने अंदर से थॉट में सिर्फ यही बोला
कि God, I really want to do my practices. I don't want to leave my prayers. I don't want to do anything. And you won't imagine, within 5 minutes, she's calling me back again. अरे जान दे, मत तैयार हो जा. ऐसा डर, मैं तो तैयार हो गई, कपड़े पहन लिए मैंने. फिर अरे मत तैयार हो जा, डॉक्टर दिल्ली गई हुई है. This is how your gratitude power works. This is how your मैंने यानी if I want to sit in the gratitude sessions now, when I used to sit, I don't wanted anyone to disturb me. I used to pray ये मेहमान घर पे नहीं आए. It used to happen. I used to pray, God, I really want to sit into gratitude practices. So you see what you want. If you say to the universe, he knows कि आप सच्चे मन से वो चीज मांग रहे हो, वो देता है. ट्राई, मैं वही बोलती हूँ ना, सिर्फ सुनो मत, सिर्फ मैं बोल रही हूँ उसके लिए करो मत. एक्सपेरिमेंट करो खुद की लाइफ पे, अपने आप को चैलेंज करो कि यार मैं करके देखती हूँ. फिर देखो आपका वो लॉजिकल माइंड कैसे मूव होता है. वेन यू विल एक्सपीरियंस विद बिलीफ ना, तो आपका लॉजिकल माइंड शिफ्ट होता है. बिकॉज मेरा भी वही माइंड था, सेट था कि कैसे होगा कैसे होगा. बट जब आपने फेथ डाल दिया ना यूनिवर्स पे, एंड आई ऑलवेज बिलीव, अगर मेरे मन में कोई चीज आई है ना, तो दैट इज ऑलरेडी देयर इन रियलिटी. दैट इज वाई वो मेरे मन में आ रही है कि ये करो, ये करो. अगर गॉड बोलता है ना कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में जाओ 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 जाओ, तो वो भी आपको बिकॉज देर इज एन समथिंग he has put that into mind, because it is there in reality. So now he's putting that thing, that desire has come inside you. Now I have to start taking that action. I have to start practicing that to reach that level. ऐसा होता है. Nothing works without universe. I'm very much sure about it. Done? So tomorrow we will be doing count your blessings. That is the main thing. अभी और कुछ आपके दिमाग में आ रहा है? Any question coming into your mind? Still, please be very clear. Understand today. Understanding is very important. Ma'am, I just feel one thought which I wanted to share, ma'am. When with my son, right? And even with my kids, like, when they are grateful for something that you give, right? You feel like you want to do more for them. And when they're complaining and being grumpy, you feel like you want to give them time out, right? So it is, I don't know, Bhagwan bhi aise hi soch raha hoga humko, right? Yes. So that's what I thought. It was an immediate feeling for me, which that is what I had given last time also an example. आपने कोई फ्रेंड को जाके गिफ्ट दिया, और अगर वो फ्रेंड ने उसको प्रेस किया कि यार तूने कितना अच्छा मेरे लिए गिफ्ट लेके, वाओ आई रियली लाइक दिस गिफ्ट एंड ऑल, आपको नेक्स्ट टाइम उसको और देने का दिल होगा ना कि यार इसके लिए मैं और कौन सा अच्छा गिफ्ट ला के दूं कि शी रियली लाइक्स इट. बट अगर वो फ्रेंड ने से बोलते यार ये कौन सा कलर उठा के लेके अच्छी, यार मुझे तो ये बिल्कुल पसंद नहीं है, आप देखोगे आपका दिल बिल्कुल नहीं होगा. नेक्स्ट टाइम उसको देने के टाइम पे 4 बार आपके दिमाग में क्या दूं यार, इसको तो ये भी पसंद नहीं आता, इसको तो ये भी पसंद नहीं आता, मैं क्या दूं. योर माइंड स्टार्ट्स वर्किंग दैट वे. देन द सेम वे द यूनिवर्स वर्क्स. सी यू अंडरस्टूड फ्रॉम योर ओन एग्जाम्पल विद चिल्ड्रन. जब आपके बच्चे आपका सुनते हैं, कहना मानते हैं, आपको ऐसा दिल होता है यार चल इसको दे दो, चल इसको ये कर दो, चल लेट मी डू फॉर देम. बट अगर वो नहीं मानते हैं तो कितना गुस्सा आता है कि नहीं, आई डोंट वांट टू गिव, आई डोंट वांट टू गिव, बिकॉज दे आर नॉट ग्रेटफुल फॉर दैट. बट इफ दे से कि यार नहीं मम्मी आप मेरे लिए बहुत कर रहे हो यार, यू आर स्पेंडिंग सो मच टाइम फॉर मी, यू आर टेकिंग सो मच एफर्ट फॉर मी, टू कम एंड दिस एंड दैट, हाउ नाइस यू फील. देन यू फील लाइक डूइंग मोर. दिस इज ह्यूमन नेचर. दिस इज द ह्यूमन नेचर. द सेम वे हम भगवान को ऐसा बोलने की बजाय तू मेरा ये काम कर देगा मैं तुझे पेड़ा चढ़ाऊंगी, वो मेरे को सबसे खराब लगता है. वो मुझे सबसे खराब लगता है. यार तुम क्यों, वो क्या भिखारी भिखारी है क्या भगवान? ही इज अ गिवर. ही डज नॉट एक्सपेक्ट कि तू मुझे खाने की चीज देगी तो मैं तेरा कुछ करूंगा. ही एक्सपेक्ट दैट वी प्रेज हिम, वी अप्रिशिएट हिम, वी बी थैंकफुल फॉर हिम. ही नीड्स दैट. गॉड इज वेरी लविंग, वेरी लविंग. बट जब तक आप उसको मन से शुक्रिया नहीं करोगे, यार सच में किसी किसी को तो घर भी नसीब नहीं होता है.
There are people I know, who are trying to make a house from so many years, but अभी तक उनका खुद का घर नहीं बना. My own sister, who just expired last year, she a rental. I just spoke to my jijaji just 2-3 days back. He still say कि नहीं यार मेरा वो अभी भी घर का हुआ ही नहीं है. Imagine, it's been 30, 35, 40 years now, and their house is not made. So you should, if you have a house, be thankful. Even if it is a rental house, be very thankful. Yaar, I have rental house, usko itna praise karo कि you start attracting more bigger house. You have a job, उसको इतनी प्रेस करो कि आपकी हेल्थ, अगर आंखें अच्छी है, पैर अच्छे है, ठीक है यार, नीज में दर्द हो रहा है, बट बाकी के तो अच्छी है ना बॉडी, उसको इतना प्रेस दो, इतना अप्रिशिएट करो, फील करके दो यार, सच में. यू विल स्टार्ट हैविंग मोर ऑफ दैट. इतना आप अट्रैक्ट करना शुरू कर दोगे वो चीजों में, इतना अट्रैक्ट करना शुरू कर दोगे. बट बिलीव, यस, वो बिलीव. और जब आप ग्रेटिट्यूड करते हो ना, तो दिल से, यानी देखो, शुरू शुरू में मुझे भी फीलिंग नहीं आती थी. इवन मंजू मैम नोज दैट, प्रशांत जी ऑल्सो नोज दैट. Very logical. He used to ask me what questions you ask, like. But slowly you start getting the feeling. Whenever I write, I start crying. Whenever I write, I start crying. यार, इतनी चीजें हैं यार मेरे पास, फिर मैं क्यों इतना, why was I so upset, when I was working, when I had so many things. I was traveling by cab, I'm doing everything, cabin itna acha, everything was there. People darwaze ke paas bhai, she used to open the door, then only she let anyone come. Ma'am, isko bheju, nahi bheju. Like, so much of good things in life, and I never praised that. I really felt कि यार इतनी अच्छी लाइफ है, इतनी सब कुछ है, then what was missing that I never became grateful for that. So whatever you have currently, just praise that. Be very grateful. Today, one day I don't get to practice. Next day, if I'm able to get more time for practice, I say thank you. Today, instead of that 4 hours, I got 8 hours to practice. So even for that, you have to be thankful. कि यार ऊपर वाले ने तुमको आज उतना टाइम दे दिया ये सब करने के लिए. Because today's day for me is very auspicious. I go into meditation, I do so much of writing work also. आज के दिन तो जितना तुम पैसों के लिए ग्रेटफुल रहोगे ना, जितना मनी के ग्रेटिट्यूड करोगे ना, you will see, you will attract more. So I to write 108 पूरा लक्ष्मी माँ का full, saying all that for whatever things I have got and everything. Then I do my dream ka 33 times ka 3 days ka practice. For 3 days, you write your dream continuously for 33 times in one single sentence. See the effect. Try and do it. मैम, ये जो 33 टाइम्स आप बोल रहे हो ना, ये जैसे हो गया है वैसे लिखते हैं ना हम? Yes, हो गया वैसे लिखना है. So I'm grateful that I was. Thank you for the 50,000 received. Make it little short because we write it for 33 times. So make it little short so that you are able to writing 30, because वो यार 33 times लिखना पड़ रहा है ना, वो भी नहीं होना चाहिए. कि एनर्जी डालनी होती है ना उसके अंदर. तो यू शुड नॉट फील कि यार कब खत्म होगा, कब खत्म होगा, कब खत्म होगा. इट टेक्स टाइम. तो वो, बट 3 days you start from today, tomorrow and day after, you see the difference. And limiting beliefs, अगर आपकी कोई भी आज limiting beliefs है ना, release that by writing it out. अगर अभी भी आपकी, सी हमको लिमिटिंग बिलीव्स हर 2 दिन में आती है, कुछ ना कुछ नया आता है. तो जो भी आपकी लिमिटिंग बिलीव्स है, लिखो, रीड करो उसको, कि आई हैव दिस लिमिटिंग बिलीव्स, कि पैसे कि पेड़ पे नहीं उगते, या पैसे आएंगे तो खराब हो जाता है, या लाइफ ऐसी हो जाती है, या मेरी हेल्थ कभी अच्छी होगी नहीं, या आई कैन नॉट डांस. जो भी आपकी लिमिटिंग बिलीव है ना, लिखो उसको, रीड करो, टेयर करो, और यू टेक अ कैंडल एंड जस्ट बर्न इट आज के दिन में. इट इज वेरी इफेक्टिव टू रिलीज योर नेगेटिव दिस. ठीक है. एंड डू 108 times लक्ष्मी माता का, इफ यू कैन डू. Take the money bundle also, and you can count it at night. What we do that way, you can do that also. Okay.
So let's wind up. God bless you all. May you receive all that you require. Thank you all for joining. God bless you all, and be in meditative practices. Do your practices, write gratitude before you sleep, at least for half an hour. Sit and do if you cannot do for more hours today. Today is very auspicious day and good energy also. Okay. Thank you, ma'am. Good night. Yeah. Thank you. Thank you all for joining.